We are solving today this paper, November 2020, and paper 1 variant is 1 1. Look at this first question of this paper. Find the set of values. Find the set of values of m for which the line with the equation this is the equation of the line, and the curve with the equation this. This is a line and this is a curve. Do not meet. Here the concept of discriminant lie. When the line and the curve do not intersect, then the discriminant will be less than 0. No, this is a situation actually. The curve line do not meet the curve. This is a quadratic curve, and this is a line. Clearly, line does not meet the curve. So discriminant must be negative. Now we will merge these two equations, line equation and curve equation. We will merge these two equations by using substitution method to have a general quadratic equation. First, 2x, this becomes 2x square plus 5 is equal to mx minus 3. Now we will write it in standard form. This becomes 2x square minus mx, writing in order, 5 plus 3 is equal to 0, 2x square minus mx plus 8 is equal to 0. Now this is A, this is B, this is C. B square minus 4ac less than 0. B square minus 4ac is less than 0. And B square means minus m square minus 4a is 2, c is 8 less than 0. M square minus 64 is less than 0. Now 64 is the square of 8, so we can write it as m square minus 8 square, factorizing using identity m plus 8 into m minus 8 less than 0. Now critical value m is equal to negative 8, m is equal to positive 8. Now set of values we will find by this. This line is x-axis. This is a curve. Smaller value left पे. This is minus 8. This is plus 8. So set of values will be away from these two values. This arrow shows the values of m greater than 8. This arrow shows the value of sorry, ये हमने mistake की है. Solution actually, since the negative solution lie between these two values. Since the y is negative, in this portion lies between below the x-axis. Below the x-axis means the value of the function is negative. So value of the function, our function is this. This is a function. Our function is clearly negative. तो फंक्शन y की वैल्यूज को कहते हैं, y की वैल्यूज नेगेटिव होती है बिलो द एक्स एक्सिस. दिस एरिया लाइज बिलो द एक्स एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस. This area lies below the x-axis, so the solution is
set of values m lies between minus 8 and 8. Lies between these two values. Next question of this paper is the equation of the curve is such that dy over dx is equal to 1 over x minus 3 whole square plus x. This is the gradient expression of the curve. This is the gradient. It is given that the curve passes through the point. इस point में से curve pass करता है. We have to find the equation of the curve. तो इसके लिए हमने क्या करना है? We will integrate each side to find y. Since dy over dx is equal to, we can write it as, इसको यूं लिख लेंगे कि क्या हमने इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, तो x माइनस 3 पावर -2 प्लस एक्स. नाउ वी विल इंटीग्रेट ईच साइड. लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास y रह जाएगा. इंटीग्रेटिंग लेफ्ट साइड बिकम y. राइट साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे x माइनस 3 पावर -2 प्लस एक्स with respect to x. dx shows with respect to x because the variable involved is x, so with respect to x we will integrate it. This becomes y is equal to x minus 3 1, and we are adding in 1 in the power minus 1, it becomes minus 1 plus integration of x is x square over 2 plus c. Simplifying it, y is equal to negative 1 over x minus 3. पावर -1 है, डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो सो नेक्स्ट टर्म में विल बी x square over 2 plus c. Now this is the equation of the curve, but now we have to find the value of c. How we will find the value of c? This is the equation of the curve. This is the equation of the curve. Now this point is given 2 7. This point lies on the curve, so we will put this point 2 7. Y is 7 and x is 2, so this becomes y is 7. 7 is equal to minus 1 over x is 2. 2 minus 3 plus 2 square, that becomes 4 over 2 plus c. From here we can find the value of c. 7 is equal to minus, this become positive 1 plus 2 plus c. From here c will be 7 minus 3, c is equal to 4. Now putting this value here in this equation of the curve, we will put the value of c here. Now this equation becomes y is equal to minus 1 over x minus 3 plus x square over 2 plus 4. Now come to the next question of this paper. Question number 3. Air is being pumped into the balloon in the shape of the sphere so that its volume is uh, increasing at a constant rate of this. This is 50 cm cube per second. This is the rate of increase of volume. Rate of increase of volume is given. Find the rate of increase. Find the rate at which the radius is increasing. We have to find rate of increase of radius when the radius is 10 cm. This is a question of rate of change in
the part of differentiation चेन रूल्स की हेल्प से ये क्वेश्चन होगा. फर्स्ट, dv over dt rate of increase of volume that is given. dv over dt is called rate of increase of volume that is given 50 cm cube per second. Now we have to find dr over dt rate of increase of radius. Rate of increase of radius हम we have to find. R is given, R is 10. We know the volume of sphere is, volume of sphere होता है 4/3 pi r cube. From here we can find dv over dr. यहाँ पे ये देखें इस रिलेशन में वॉल्यूम और रेडियस हमारे पास जो है ये वेरिएबल्स हैं. ये 4/3 और पाई जस्ट कांस्टेंट. तो सो यहाँ से हम dv over dr फाइंड करेंगे. डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू r, dv over dr becomes 4/3 pi is just a multiple. हमने सिर्फ डिफरेंशिएट करना है r3 को, विच इज इक्वल टू 3r स्क्वायर. ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है. तो वी गेट dv over dr 4 pi r square. The value of r is given. Value of r is 10. So putting here the value of r 4 pi 10 square, this becomes 400 pi. अभी आपने पाई की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी, इसको ऐसे ही रहने दें. नेक्स्ट वी विल यूज हियर चेन रूल. चेन रूल इज, चेन रूल में इसमें आपके सिलेबस में 3 डिफरेंशियल्स होते हैं. these are called differentials. dv over dr is equal to dv over dt into dt over dr. These are the differentials. dv over dr, dv over dt, dt over dr. Now dv over dr is given. This is dv over dr. Putting here 400 pi dv over dt. It is also given. dv over dt is given. That is 50 into dt over dr we can find. So from here dt over dr is equal to dt over dr 400 pi over 50. That becomes dt over dr is equal to 8 pi. But actually we have to find this is dt over dr, but actually we have to find dr over dt. So dt over dr is the reciprocal of dr over dt. So we will write it as dr. We will take the reciprocal dr over dt. r न्यूमिनेटर में चले जाएगा, डिनोमिनेटर में t, तो जो वो 1/8 पाई आ जाएगा. So now we will use calculator to put the value of pi. This will become 0.0398. Correct to 3 significant figure. This is the value of the rate of increase of radius. This is the answer. Next question number 4 is, in the diagram the lower curve has equation y is equal to cos x. इस कर्व की इक्वेशन जो है
लोअर कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन हमारे पास है y is equal to cos theta. The upper curve shows the result applying a combination of transformation to y is equal to cos theta. Multiple transformations are used here to for this curve. Original curve is this. Lower curve is the original function. The upper function comes after applying a combination of transformation to this original function. Find in terms of a cosine function the equation of the upper curve. हमने इस upper curve की equation find करनी है, जिस तरह ये lower curve की equation y is equal to cos theta है, तो upper curve की equation क्या होगी। अब आप देख रहे हैं कि ये लोअर कर्व जो है, इसका ये पीरियड इसको कहते हैं, ये पीरियड है, ये 2 पाई पीरियड होता है cos थीटा का, बट यहाँ पे दो कर्व बन रही हैं, 4 पाई तक है। cos थीटा का पीरियड 2 पाई होता है। तो सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अपर कर्व। Multiple transformations are applying on the upper curve, lower curve to have a upper curve. तो हम इसको लिख सकते हैं, we will write it as, let the equation of upper curve, let the equation of upper curve be in this form: y is equal to a cos n theta plus b। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है, ये दीज आर द मल्टीप्लाई। पहले हमारे पास सिर्फ cos थीटा था, cos थीटा में थीटा को n से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ये फंक्शन में कोई चीज़ ऐड भी हो रही है, दैट इज b, और फंक्शन की वैल्यू के साथ a मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो अब हमने वी हैव टू फाइंड नो द वैल्यू ऑफ a, n एंड b, तो वी गेट द इक्वेशन ऑफ द अपर कर्व। वी नो दैट सबसे पहले हमने देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट क्या है इस कर्व के। तो क्लियरली द मैक्सिमम पॉइंट इज फॉर minimum point of the upper curve is this. This is the minimum point and this is the maximum point. और मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं हम, वो हम इस कांस्टेंट वैल्यू को इस मल्टीपल ऑफ कॉस, जो मल्टीपल ऑफ कॉस इन दोनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट द मैक्सिमम पॉइंट। तो सो बी प्लस ए इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉइंट, आप कर्व के ऊपर देख रहे हैं, कर्व के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट इज 5, तो बी प्लस ए इज इक्वल टू 5, और बी माइनस ए जो है दैट विल गिव यू मिनिमम पॉइंट। बी माइनस ए इज इक्वल टू, मिनिमम पॉइंट इज this of the upper curve, minimum point is 1, so b minus a is equal to 1। adding these two equations we get, ये a से a कैंसिल हो जाता है, तो 2b is equal to 6 और b is equal to 3। b हमने फाइंड कर लिया। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b इन एनी इक्वेशन, यहाँ पे पुट कर देते हैं, दिस बिकम 3 plus a is equal to 5, from here a is equal to 2। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड करना है n, व्हाट विल बी n क्या होगा। तो दिस शोज द clearly the period of cos theta is 2 pi। तो व्हाट इज द टू फाइंड द पीरियड ऑफ, इफ थीटा के साथ कोई मल्टीपल हो तो उसका पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम पीरियड फाइंड करते हैं इस तरह।
आपने डिवाइड कर देना है 2 पाई को, जो मल्टीपल ऑफ थीटा है, तो मल्टीपल थीटा इज n, तो सो वी विल डिवाइड 2 पाई बाय n, that is the that is equal to the period of the upper curve. अपर कर्व का पीरियड जो है ये देखें, उसका पीरियड जो है 4 पाई है। 4 पाई तक ग्राफ अपर कर्व का कंप्लीट होता है। तो सो पीरियड वैल्यू 2 पाई/n is equal to 4 पाई। From here n will be equal to 2 पाई/4 पाई, that is n is equal to 1/2. So we will put these values. N is equal to 1/2, A is equal to 2, B is equal to 3, B is equal to 3. These values we will put here. यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास अपर कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। तो अपर कर्व की इक्वेशन हमारे पास आएगी, putting the values of a, b and n. Y is equal to 2 cos 1/2 theta plus 3. These are the multiple transformations on the lower curve. This is the equation of the upper curve.